Everyone, welcome to my channel Arts of with Ayush. Before starting the video, please subscribe my channel. So let's start. After Blenheim by Robert Southey. First stanza. It was a summer evening. Old Caspar work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun. So in the very first four lines, the poet is starting with a visualization of the evening scene. We can see here यहाँ पे लिखा हुआ है evening, summer evening. So it is summer. Okay, so it is summer season, and old Casper, who is the main lead character, is the farmer. He is a farmer. So please remember it, he is a farmer, and his work was done. So everyday farmers used to work very hard. उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके दिन भर अपना काम करना पड़ता है. And he before his Scottish door. So now what is the meaning of these lines? Actually, after daily work, after a tiresome work of the whole day, the farmer, old Casper, came near to his cottage and he sat before his cottage door. So उसने अपने cottage door के सामने खटिया या फिर हम लोग बोल सकते हैं चेयर लगा के बैठ गया. Was sitting in the sun, and the sun was still there, because as we are assuming that it is a summer evening, so the sun is still there. So it is a summer evening and the sun is still there. Summer के दरमियान sun काफ़ी देर से set होता है, तो इसीलिए sun अभी तक है. And by him spotted on the green, and from his cottage door he is spotting his granddaughter whose name is Wilhelmine. So वो अपने कॉटेज के पास से बैठकर अपनी ग्रैंड डॉटर पोती को खेलते हुए देख रहा है. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर ही सॉ हिज ग्रैंड डॉटर विलेनमाइन प्लेइंग इन द ग्रीन गार्डन. सो हियर इट इज द फर्स्ट स्टैंजा. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड स्टैंजा. Stanza number 2. She saw her brother Peterkin. Now see, who is she here? Here she is Wilhelmine. So here she is Wilhelmine. She saw her brother Peterkin. This is the name of the second grandchild of the old Caspar. Peterkin ये पोते का नाम था. Roll something large and round. So what did she saw Peterkin doing? She saw that Peterkin was rolling something large and round. बड़ा ही गोल सा कुछ एक स्मूथ सा ऑब्जेक्ट वो रोल करके ला रहा था, which he beside the rivulet in playing there had found. And Peterkin has found that object beside the rivulet. Rivulet means beside the river, beside the stream. He found that object. He came to ask what he had found. So after finding that particular object, Peterkin came to his grandfather in search of inquiry. He was having the curiosity and he was having the urge to find about what that thing was. So that was so large, smooth and round. So this is the classification and the specification of that round object, that it is very large, smooth and round. बड़ा ही गोल सा एक ऑब्जेक्ट था वो. So moving on to the third stanza 3. Now again, that was so large and smooth and round, old Caspar took it from the boy who stood expectant by. So what's the meaning of these three lines? That particular object was very large, smooth and round. बड़ा था, चिकना था और गोल था. Old Caspar the farmer took it from the boy. उसने अपने पोते के हाथ से वो ऑब्जेक्ट ले लिया. Who stood expecting. Now who is who on in this line? Actually this who is referred to Peterkin. So this is Peterkin, and Peterkin was waiting with full of curiosity, expectant. He was expecting to know much about that particular object. And then the old man shook his head, and in this line we can see that the old man shook his head in a sigh, in a grief of
in grief, or we could say in sigh manner. And with a natural sigh, see, we can see here, and with a natural sigh, he said, "This some poor fellow's skull," said he. So Mr. Casper, the old Casper, replied to Peterkin that the round object which he found is like a skull, is actually a skull of somebody, of some poor fellow who is considered to be as a commoner, or as a soldier who fought in that great victory, who fell in the great victory. And now he's adding one more line, old Casper, that who fell in the great victory. So now the question arises that what is the great victory? That we will figure out, and we will come to know in the next stanza. So moving on to the next stanza, stanza 4, चौथे stanza में देखते हैं क्या मिलता है. I find them in the garden, for there's many here about. So now who is telling these lines? These lines are told by old Casper. Old Casper is telling these lines. Okay. Now he says that I find them in garden. So it is not very much new. ये कोई नया बात नहीं था कैस्पर के लिए. उसने इन चीज़ों को पहले भी गार्डन्स में देख रखा है. For there's many here about, and according to Casper, यहाँ पे कई सारे ऐसे skulls मौजूद हैं पहले से. And often when I go to the plow, और जब भी प्लाव का मतलब जब ये हल चलाने, या फिर उस टाइम पे हल या फिर ट्रैक्टर कुछ भी होगा, जब वो खेत को जोतने जाता था तो उसके प्लाव में हमेशा ये जो स्कल्स हैं वो फंस जाया करते थे. द प्लाउ शेयर हल, द प्लाउ शेयर टर्न्स देम आउट, और उससे सभी खोपड़ियाँ बाहर निकल जाती थी. फॉर मैनी थाउजेंड मेन, सेड ही, were slain in that great victory. So according to old Casper, these were the skulls, these were the corpses which are still there, which are the remains of the corpses which are still there, and these all remains are actually remaining, are actually belonging to the people or the soldiers who fought the battle of Bellenheim and died over there. So moving on to the next stanza, stanza number 5. Now tell us what that was all about. Now when old Casper said that many people died in that particular battle, so these things made the grandchildren very much excited and filled them with the lots of curiosity, and they are now wanting to know more about that particular matter. And they ask, now tell us, they are asking from their grandfather, now tell us what that was all about. ये सभी चीज़ें क्या हैं? Young Peterkin, he cries. So young Peterkin asks from his grandfather. And little Wilhelmine looks up. और जो Wilhelmine थी वो बड़े ही क्यूरियस नज़रों से ऊपर देख रही थी अपने दादा की तरफ कि कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ज़रूर. With wonder waiting eyes, curious eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. Now this is the question which is raised by Peterkin. So Peterkin is asking this question from to his grandfather, old Casper. So वो पूछ रहा है कि हमें अब बताइए उस वार के बारे में, और उस वार को क्यों लड़ा गया, and what they fought for, और किस लिए उन्होंने ये चीज़ को लड़ा, इस वार को लड़ा. सो देखते हैं इसका आंसर क्या हमें मिलता है नेक्स्ट स्टैंजा में, स्टैंजा 6. नाउ कास्पर अब कह रहा है, इट वाज द इंग्लिश, Casper cried, who put to French to root. French to root means इंग्लिश ने, इंग्लिश कौन थे भाई? ब्रिटिश. सो इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच, इन दोनों के बीच में ये पूरा का पूरा जो वार है ये हुआ था. ठीक है. सो कैस्पर सेड दैट इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, बट what they fought each other for, I could not well make out. So Casper knows just about this, that English defeated French, लेकिन किस लिए? The reason of war was not known. So the reason of war was not known
बाय कैस्पर। कैस्पर को खुद भी नहीं पता था कि असल में लड़ाई किस लिए हुई थी। बट एवरीबडी सेड, बट वन मोर थिंग, कैस्पर इज एडिंग नाउ एंड ही विल एड अप। बट एवरीबडी सेड कि सब लोग कहते हैं दैट दैट वाज अ फेमस विक्ट्री। सो कुछ भी हो, लेकिन कैस्पर के लिए सभी लोग जो कहते हैं दैट वाज अ फेमस विक्ट्री। सो अब ये फेमस है कि नहीं ये तो हम आगे देखेंगे, क्योंकि कोई भी बैटल या वार कभी भी फेमस नहीं हो सकता। चलिए सेकंड नेक्स्ट स्टैंजा तरफ, स्टैंजा नंबर 7। माई फादर लिव्ड एट बेलेनहिम देन। सो अब कैस्पर जो है वो अपने आप के बारे में, अपने स्टोरी के बारे में बताता है। माई फादर मीन्स कैस्पर्स फादर, कैस्पर्स फादर। कैस्पर्स फादर लिव्ड एट ब्लेनहिम देन। उस समय पे जब वार चल रहा था तो कैस्पर के फादर वहाँ रहा करते थे। यन लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाय, नियर दी स्ट्रीम। सो इनका घर एक स्ट्रीम के बगल में ही था उस समय पे जब वार या बैटल चल रहा था। दे बर्न्ट हिज ड्वेलिंग टू द ग्राउंड। सो नाउ हु इज दे? कैस्पर इज टेलिंग दे टू द फ्रेंच आर्मी, टू द फ्रेंच आर्मी, because they are the enemies of the British. So the French army burnt his dwellings, means houses, to the ground. So the French army, they set fire to whole of the village and they burnt all the houses, and he was forced to fly. So he doesn't considers, or he doesn't means only one person. He here means the whole lot of people who are there in that particular small town or village. They all were forced to fly, means they all were forced to run away from there to save their life, to save their lives. So with his wife and child he fled. So with his, now his here is Casper's father. Casper's father with his wife and child, means Casper's mother and Casper himself, they fled from there, nor had he where to rest his head. So they went off from there, from that place, in search of a rest place or in search of safe place. But actual में उन्हें कहीं भी safe place मिलता नहीं है, क्योंकि that was the war zone, और that was the time of war. They were in middle of war, और कहीं war के समय पे दरमियान तो कहीं कुछ भी नहीं मिल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 8। With fire and sword country round was wasted far and wide, and many a childing mother then and newborn baby died. So इस स्टैंजा में हम देखेंगे बड़ा ही हॉरिफिक सा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कैस्पर द्वारा, ओल्ड कैस्पर द्वारा। He says that with fire and sword country round was wasted far and wide. So the fires means the gunfire, bombing, selling, swords, they all were just slain. The enemies and the battle and the war, not just enemies, both the armies just slain and killed. They killed many peoples, and they killed each and every one. Many childing mother means pregnant women died during that time, and newborn babies also, because just imagine कि अगर कोई माँ है अपने बच्चे के साथ, एक जन्मजात बच्चे के साथ अगर माँ को मार दिया जाए तो वो जन्मजात बच्चा नहीं रह पाएगा, तो बहुत सारे बच्चे भी मारे गए। बट थिंग्स लाइक दैट मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही क्रूअलसम सा कोट यहाँ पे है जो कैस्पर कह रहा है। अकॉर्डिंग टू कैस्पर, दो many people died, many means thousands of people died in that particular war, but according to Casper, he is justifying it, and is telling that at every famous victory it is casual, means it is there at every famous victory. इट इज़, ये काफ़ी लाजमी है। अब कितना लाजमी है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि कैस्पर का जो रिमार्क है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही सिली लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने लोग मारे गए, लेकिन कैस्पर के लिए ये एक फेमस विक्ट्री है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा 9। सो
They say it was shocking sight after the field was won. So Casper was very little, very small at that particular time. Actually, he is not knowing much about it. But according to the people who witnessed that, they say. So these were the people who witnessed that. They say it was shocking sight. The sight was completely horrific. So after the field was won means the battle won. The English won. English means the Britishers won the battle, but the sight was completely disastrous and horrific. For many thousand bodies were lay rotting in the sun. सूरज के किरणों के नीचे, सूरज का तपतपाता जलता हुआ धूप के नीचे बहुत सारे बॉडीज बिखरे पड़े थे. अराउंड थाउजेंड्स के तादाद में बॉडियां बिखरी हुई थी. सभी जगह सिर्फ लाशें थी और सड़ी गली लाशें जिन्हें चील कौवे खाया करते थे. तो ये काफ़ी एक हॉरिफिक सा मंजर यहाँ पे सिनेरियो, काफ़ी भयानक सा एक सिनेरियो इस जगह पे पोर्ट्रे किया गया है. For many thousand bodies were laying rotting in the sun, and nobody is there to take care of these bodies, and nobody has came to claim these bodies. So it was very shocking. But things like that again, no, must be after a famous victory. But then also people say that it is compulsory and it is known that these things must be after every famous victory. So it was just unfortunate of people saying that it was a famous victory. 10th stanza. Great praise the Duke of Marlborough won, and our good Prince Egwene. Why, that was very wicked thing, said little Wilhelmine. Nay, nay, my little girl, quoth he, it was a famous victory. So in the 10th stanza, old Casper praises about the patriotism, about the heroic deed, about the bravery done or shown by Duke of Marlborough and the good and the Prince Egwene, who were the leaders of the British army, who were leading the British army. So according to old Casper, that these two guys, these Marlborough and Egwene, they showed a lot of bravery, patriotism, and they are very much heroic. So these some things they also, and these all things filled up old Casper with lots of patriotic feeling. और उसके अंदर एक जज्बा था कि हमारे लिए मार्लबरो और इग्वेन ने बहुत ही कुछ किया, और लेकिन जो लोग मारे गए उनके बारे में वो कुछ भी नहीं कहता था. सो विटिल वेलेमाइन जो उसकी पोती थी, ये सब बातों को सुन के ही कम्प्लीटली गेट प्रिप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज दैट व्हाट माय ओल्ड ग्रैंडफादर इज स्पीकिंग अबाउट. वो काफ़ी कंफ्यूज हो गई और उसने इसका ऑब्जेक्ट किया कि ग्रैंडपा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. बट old Casper replying in a negative way and says, no, 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 little girl, it was a famous victory. I have nothing to say, but it was just a famous victory. तो चलिए लास्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं. स्टैंजा नंबर 11. And everybody praised the Duke. According to old Casper, everyone in Britain, they praised the Duke, who this great fight did win. Who win this battle, who win this fight. But what good came of it? Quoth little Peterkin. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इज अराइज्ड बाय पीटरकिन. पीटरकिन ने पूछ रहा है कि व्हाट गुड केम फ्रॉम इट, क्या कोई अच्छा चीज़ उससे आया एट लास्ट. फिर उस समय पे ओल्ड कैस्पर बोलता है, वाई दैट आई कैन नॉट टेल, क्यों मैं बता नहीं सकता, बट दैट वाज अ फेमस विक्ट्री. सो द अनफॉर्चुनेट and the final comment by old Casper is this, that he doesn't know what odd or what bad or what good came from that battle, but then also still he is considering it, which is unfortunate really, that was a famous victory. So from this poem we are coming to know, हम इससे देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसान के लिए ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है. दूसरे इंसान मारे जाते हैं, लेकिन एक
जीत के लिए इंसानों का बलिदान बड़ा ही नॉर्मल है, और कुछ लोगों के लिए ये दिमाग में बस जाता है कि बस जो भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ और ये हर एक वॉर में ज़रूरी है। तो काफ़ी अच्छा पोएम था। पोएम के साथ साथ मैंने यहाँ पे मोरल एंड सेंट्रल थीम को भी दिखा रखा है, लिख रखा है। साउदीज पोएम आफ्टर बेलेनमी इज एन एंटी वार पोएम है ये पूरी तरीके से। knowing what good it does to mankind or why a victory is called great। सऊदी इसमें बताना चाहते हैं कि क्यों इस विक्ट्री को ग्रेट क्यों कहा जाए। ही इज अराइजिंग अ क्वेश्चन एक्चुअली कि वाई अ war is called great because not a single war in this world और a battle in this world is great। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें अफ़गानिस्तान में या फिर सीरिया में, हर जगह पे वॉर चल रहा था, सिविल वॉर है, इंटरनेशनल वॉर है, वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन किसी का अच्छाई, किसी के लिए अच्छा अगर कहा जाए तो ये नहीं हो सकता। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 का एंडिंग शायद न्यूक्लियर वेपन से किया हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, लेकिन उससे बहुत ही सारे लोग, अराउंड करोड्स ऑफ पीपल्स डाइड इन दैट पर्टिकुलर मैसेकर, बट नथिंग गुड केम फ्रॉम इट। So in the poem we see that old Caspar repeatedly mentions the battle of Blenheim as a great and famous victory, but he does not know the reason। लेकिन लोगों को रीज़न नहीं पता होता है कि असल में युद्ध क्यों लड़े जाते हैं। He has romantic view, काफ़ी लगाव था ऑफ वॉर even after receiving the suffering himself। वो खुद भी इस वार का वार विक्टिम रह चुके हैं, उनके घर को जलाया जा चुका, लेकिन फिर भी उनके मन में ये एक फीलिंग है, भावना है कि वार बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द hollow romantic ideals regarding the war that warmongers have created very carefully in people's mind। So warmongers जिन्होंने ये वॉर करवाया है, इन्होंने पीपल के दिमागों में, इंसानों के जहन में ये काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया है कि किस तरीके से वॉर्स के लिए वे रहें और वॉर बहुत ज़रूरी है। तो देखें आगे क्या है। ये रहा मोरल एंड सेंट्रल थीम। आगे हम लोगों को देख सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीचेस में क्या क्या मिलेगा हमारे लिए। यहाँ पे कॉन्सोनेंस एंड एट्रिब्यूशन है, आर्केज़म है, आयरनी है और मेटोनमी है। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ और भी हैं, तो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। Thanks for your response to my videos. Please share my video and look on the other videos also, The Heart of the Trees and The Cold Within. Thank you.